from the Mr. Manoj Verma. He was the star anchor of Sansad TV. Even we discussed about the e-resources with Dr. Shriram Pandey. Even discuss about the political and democracy of India. Even we discuss the language. And now we are entering into history. History, इतिहास. मतलब ये है कि जो आज बीत रहा है, जो भी है, जो इस्तेमाल हो रहा है, ये तो है अभी वर्तमान. लेकिन अभी कुछ देर के बाद में ये इतिहास बन जाएगा. और इसको लिखने वाले लोगों की जो रिपोर्टर साहब में से बैठे हुए, कुछ लोग इसको असाइनमेंट के रूप में लिखेंगे तो इतिहास हो जाएगा. एक इतिहास बताने वाला होता है, एक लिखा हुआ इतिहास होता है. दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. और जब इतिहास के बारे में बात करने के लिए और इतिहास की जानकारी एक पत्रकार को या लेखक को क्यों होनी चाहिए, उसके ऊपर ये सब है. मीडिया पर्सपेक्टिव इतिहास का क्या हो सकता है, और जिस आदमी का चयन किया गया, जिस शख्सियत का चयन किया गया, जिस विद्वान का चयन किया गया, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, फील्ड पर और जमीन पर और घास के साथ मिलकर और मिट्टी के साथ मिलकर कैसे इतिहास का रचा जा सकता है, उसके मर्मों के आदमी है. और सुबह से लेकर 2 नीरज को तो आप सुन चुके हैं, तीसरे नीरज चलाएंगे. और ये डेडली कॉम्बिनेशन ये है कि ये करण भी है. तो डॉक्टर करण पलसानिया हमारे बीच में, हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इतिहास के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं. और जितना मैं जानता हूं, इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर इतिहास को ढूंढने के लिए या फील्ड पर काम करने के लिए ये ना गए हों. ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच में पाकर नहीं मानते हैं और मेरे परम मित्र हैं. मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस डिपार्टमेंट में. जोरदार तालियों के साथ मीडिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर आऊंगा. धन्यवाद. सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड जर्नलिज्म का, और साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा हमारे मित्र डॉक्टर जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, वो मौका दिया. विषय ऐसा है जिसके बारे में मैं सोचता रहा. मैंने सोचा इतना संभावनाओं का विषय है और बहुत सारा कंटेस्टेशन का भी विषय है इतिहास. And a lot of debates are happening around the history, and a new alternative history writing is getting developed in the country, which was left out completely. So it is very important for us, and at least for the media communication department, that you should know that how to deal with these historical events. Those are taking place over the time period. When sir was talking about the perspective, what is the perspective? The perspective is that how you are trying to analyze any individual event which is happening, and what is the importance of that. Whether we are just looking that particular event only with a one perspective, or there are multiple perspectives to look that particular event. This is a very important for any individual to look. And why I am telling this to all of you, because as a media personnel, your responsibility, a greater responsibility lies on your shoulders. Why it lies? Because you are largely taking a message for the society. The society which will take your opinion as on a face value. Whatever you are telling them, it will be final that okay, this person is telling the right. So now, when we are handling any event, as a historian, we always tell that a person needs to be objective. Okay. Do you have the minimum sense of the objectivity? Because I'll be having reciprocity in this particular lecture also. While delivering my lecture, I might ask few things to all of you also. Because the knowledge should not be one way, it should be both the ways, and we should be interactive more. So,
when we talk about the objectivity, then also we are somewhere subjective, because we are influenced by our society, our caste, class, creed, culture, gender, different, different kind of the pressure will be on us and will be influenced by many things altogether. So we have different perspectives in a history. कुछ लोग कहते हैं, जैसे सपोज करो कोई घटना होगी, so we largely deal with that event with a particular mindset and particular perspective. एक जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आज के टाइम में भारतवर्ष में कर्नाटका एक जगह है और कर्नाटका में टीपू सुल्तान जयंती का आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। लार्जली हमारे मन में जो भावना आती है वो क्या आती है इतिहास के पन्नों में कि इतनी भव्यता से यदि कोई इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ऐतिहासिक साक्ष्य होगा या कोई महानता होगी व्यक्ति की या और चीजें होंगी जिसकी वजह से हम उसको ग्लोरीफाई करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां पर मैं एक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। पर्सपेक्टिव की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप मीडिया पर्सनल्स होने के नाते आपका एक प्रमुख धर्म बनता है कि आप उस इवेंट को, वो जो ग्लोरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उस ग्लोरिफिकेशन की प्रक्रिया को जानने पहचानने की और इतिहास में उसको जानने की कोशिश करें कि whether this person deserves some kind of a glorification or there should be some question on this glorification. This needs to be dealt as a journalist very closely, as historian we do, because क्या है कि हम जो हिस्ट्री करते हैं that is not a popular history. We concretely deal with the evidences, but you make that history popularized to the people. तो ये आवश्यकता ये है कि जब हम इस पर्टिकुलर इवेंट को डील करते हैं, then why do all of you forgets to deal that whether Tipu Sultan, because he is a symbol of the communal harmony, but do you know that Tipu Sultan have converted more than, many peoples he have converted to the Hindu religion, Islam. Apart from that, many of the atrocities have been lashed out on Hindus. Why, as a historians, there might be alternative voices are coming nowadays, but I am amused to see this, that why as a media personals there is not a single article which shows this atrocities, this intolerance towards to the larger community, and why we are so much afraid to bring out the actual objective history of the country. So this question comes to my mind again and again. Now, the moment I am delivering this talk, then why I am bringing these questionable as well as debatable topic to you, because you need to know that how to deal the different topics. Why we are afraid of dealing all these things? This is a primarily one question. Okay, as sir I have told that we deal in the history about the past, different events, what has happened, when it has happened. But do you know that there is a larger role which is played in the history writing? That belongs to the ideologies, different isms. There are different ideologies, and those ideologies have shaped the history of the India. The history of India, which you might
want to see in an objective way, but not shown to you in the objective way. So that's why history is a contested subject. The subject which has a lot of past which is not brought to us in its actual sense or in its real sense. When I am talking to all of you about the alternative history, अल्टरनेटिव हिस्ट्री के रूप में यदि मैं आप सबसे पूछूं, अल्टरनेटिव हिस्ट्री जो बताई जा रही है अभी, जिसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है, why do we afraid of the alternative history? एक इंटेलेक्चुअल का परमो धर्म पता है क्या होता है? If I call myself intellectual, then I have to engage myself in the debate, discourse, and the discussion with the other ideology person, and in this continuous debate, discussion, and discourse, one has to reach on a conclusion that what is the right, with a self-conscious that what is the right and what is wrong. Now, whatever has been written, have you heard the name of Goel, historian Goel, धर्मपाल जी? नहीं सुना? विक्रमशिला के बारे में। He has written about the culture. Have you heard जदुनाथ सरकार? जदुनाथ सरकार का नाम सुना है? Believe me, if you not have heard all these people, then you cannot do the justice to the history, at least to the Indian history and the different events. Have you heard the name of B.B. Lal? You haven't heard the name of B.B. Lal? ऐसा कोई? Okay. This another person name you might have heard, and let me ask you, R.C. Majumdar. Yes sir, yes sir. Okay. You know, R.C. Majumdar after the independence was given the task to write the history of India's freedom movement, and when he was given the task of writing the India's freedom movement after the independence, and then the ruling people, they told that this person is a disturbing, because whatever narrative we want to bring to the Indian history writing, he's writing the against to that, and he's writing objective history of India. So he was forced to quit from that project of writing India's freedom movement history. Is the India's history freedom movement only belongs to only 2-3 people? Or there is a अभी भारत सरकार ने एक श्रृंखला चलाई है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, और मैं सरप्राइज था देख के कि मतलब for the first time I have heard many of the people, जैसे रानी दुर्गावती है, हम उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है सुहेल देव, हैं? लेकिन सुहेल देव नाम के राजा हुए, Even the Chapekar बंधु नहीं, बहुत सारे चापेकर बंधु, बहुत सारे लोग, many of the people, around 4,640 freedom fighters have been brought to the limelight again by the government of India. Is it a part of the alternative history or not? If the getting recognition to a person who has really contributed for the India's freedom movement, then I think that justice which has been done by the government, it should be done by me as a historian and by you as a media personals, because that history should be narrated and told to each and every individual and to our future generation. This is much required. When
I was talking about the Dharmpal. I was amused to see that whoever sitting in this hall, many less people knows about the Dharmpal, who has written the first book about the technology and scientific India of the 18th century and the educational system of India. And none of his book made popular. Why? Because he was not fitting in the narrativization or ideological side, which says that, for each and every changes, the economy is at the base of the board. He was predominantly giving so much focus to the culture. The culture which is core to the Indian ethos and system, and कहते हैं ना, एक भारत की यदि प्राण की बात की जाएगी तो यहाँ के प्राण, यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के रीति रिवाज और यहाँ का ट्रेडिशन, वो यहाँ का प्राण है. The person who has talked about all these things is not got popularized because he was not fitting in the basic ideological side. Now I'm opening up, I'm making these remarks to you that this is the duty as a media professionals to bring this to limelight for all of you. A very important archaeologist, Padma Shri, and another one along with him, there is a good friend of mine also, K.K. Mohammed. तो मेरी कभी भी उनसे बातचीत होती है तो मैं पूछता हूँ कि ये आप एक धड़े को वाकई पूरा अंधेरे में रख दिया गया, जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना सर्वस्व उस आर्कियोलॉजी के लिए हर अपना एक मिनट उन्होंने आर्कियोलॉजी के लिए दे दिया, but they were not fitting in that particular ideological setups. बीबी लाल, जब हम बात करते हैं कि भारत की बात होगी तो भारत के जनमानस और भारत के संस्कारों की बात होगी और मर्यादा पुरुषोत्तम और उनकी बात जरूर होगी भारत में. Ram temple land was disputed over the time period for almost 500-600 years. And it was many of the claims were made again and again that there was a mosque. But when the archaeological excavations took place, then the actual, after unearthing of that, after the excavation, we got the relics of the temple. Evidences मिले, सब कुछ हुआ, खुदाई हुई, पता पड़ा कि ये तो मंदिर के अवशेष हैं, मूर्तियां मिली, बहुत सारी चीजें हुई. Now, I am not taking side of any, neither that side or this side. What I am telling that we should be objective in the history writing process. हुआ क्या? A set of the people came forward while claiming that they are the only intellectuals. And what they have said? They have said that there was not such kind of the Rama, and Itihas Purana tradition is a mythical tradition. The moment you are calling it is a Itihas, then how the Itihas can be mythical? Okay. This tradition embraces the history, and this history is coming out after the excavation of the different places where these different sets of these, either the Ramayana or Mahabharata, were the plotted. द्वारका सिटी है, एसआर राव है, उन्होंने डिस्कवरी की द्वारका की. All these years we were listening that there was not a Dwarka at all. लेकिन जब डिस्कवरी हुई, एक्सकवेशंस वगैरह हुए, तो पता पड़ा कि देयर वाज अ द्वारका.
The complexity was there. In the different literary evidences we have found the example, but when we have compared that with the archaeological evidences, we came out to the conclusion that there was a Dwarka. मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते क्या आप इतना जतन करोगे क्या कि ये जो एक्चुअल हिस्ट्री है, जो भारत के की प्राण है एक तरीके से, उसको वापस आप एक पॉपुलर हिस्ट्री बना पाओगे क्या? ये कमिटमेंट इसलिए नहीं करना है कि मैं कोई लेक्चर देने आया हूं इसलिए, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको जाके उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि भाई वाकई ये चीजें हुई हैं क्या, और यदि हुई है तो उसके पीछे जो इतिहास रहा है उस इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दैट why our leaders were so much fascinated with the Orientalist ideology and the thoughts, and how we were colonized so much, and we need to bring back our Occidental world thinking. That is very much required for all of us. So, जो वाकई जो हमारा था, हमारा है, हमारा किस तरीके से था, उन चीजों को जानना और सहेजना, उनको समझना और उसका एक ऑब्जेक्टिव तरीके से खाका खींचना और उसको जनता तक ले जाना, ये काम आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं हिस्टोरियन के माध्यम से ये बता सकता हूं कि whatever incorrects were happened in the past, it is my duty as a historian that I should bring out these incorrects of the past to all of you, and I will make sure that injustices should not happen to the history. This is my task, but your task will be that you should take that objective real history to the people. कई बार क्या होता है कि हम बहुत जो ट्रबुलेंट पास्ट होता है ना, उसके चक्कर में हम ये कहते हैं कि भाई तो बहुत दिक्कत का विषय है, दिक्कत का विषय है तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब करने से क्या है, कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। आई थिंक दैट रिस्पेक्ट शुड बी इन ईच एंड एवरी वन, बट with such kind of the thinking we cannot do the justice to our academics, justice to our profession. To do the justice we have to fight for what really have happened. We have to bring out that to the people. ठीक है? तो आजादी के बाद कुल मिला के यही हुआ कि एक ये जो माहौल बनाया गया, जो खाका खींचा गया, वो खाका इसी तरीके से खींचा गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम हिस्ट्री में हमारे जैसे मैं जेएनयू में पढ़ा तो जेएनयू में बहुत हमारे लोग थे, दोस्त वगैरह। एक विषय बार बार घूम के बाहर आता है, वो विषय क्या है? वो विषय ये है कि वी आर लिविंग इन ए इंटॉलरेंट सोसाइटी नाउ। आता है घूम फिर के। Then suddenly one question comes to my mind that India became intolerant only just in the recent times. Why India was not intolerant earlier? What has happened suddenly? This question obviously will come. It will come to each and everyone. Then I goes to back to the history, and as I go back to the history and I go to the past and investigate the past, then I comes to know that the intolerance is not happening. If you'll go by the data, then data will tell you the other way. Data will tell you that there is not intolerance.
आज क्या हो गया, इंटॉलरेंस इसलिए लगती है क्योंकि सूचना प्रसारण माध्यम से छोटी सी चीज भी तुरंत पहुंच जा रही है. यू नो दैट इन द सेम कंट्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू have banned many of the books line by line. Dharampal's book, his literature and many others got banned during the regime of Nehru. Now, when I compare and when you will also compare, then we should not go by the popular, perception which has been created around us. We have to go by the investigative, हम कहते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए. तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होना चाहिए जो फैक्ट और एविडेंस के आधार पे, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे आगे बढ़ सके और आगे चीजों को ले जा सके. और एक और चीज हम इतिहास में कहते हैं that history is written only about the kings and the queens. What about the common people? मैं तो, मेरा नाम तो इतिहास में आएगा नहीं, मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, ठीक है. This is a duty of ours that we should bring out the history of the commoners also. The moment I was telling you that the moment we are glorifying Tipu Sultan, then we are somewhere negating this fact that many of the people got converted by him, and he has lashed out a lot of violence against the Hindus as well as the many of the Christians also. So what kind of the particular mindset these people, what kind of the agony they have gone through, which we have to understand. What kind of the plight they have gone through, we have to understand. ठीक है, किस प्रकार की, कितनी उनमें कितनी असहनीय परिस्थितियों से वो गुजरे होंगे, उन असहनीय परिस्थितियों को हमें एक समझने की कोशिश करनी होगी. These were the simple examples which I have given. As an alternative history and as a role of mass communication, journalism student, your role is that you have to go by the objective history, either this or that, what actually have happened in the past, that you have to bring out. So this is basically required according to my understanding. And basic knowledge of the mass communication student should be that what is the role of the different ideologies and how should be well equipped with the different ideological understanding. That is very much required. The moment we talk about the postmodernism, then postmodernism, modernism, and what is the basic core ideological foundation of the postmodernism, you have to know that. That is very much required. So all these are, from my side. If anyone wants to ask anything, this 40 minutes. इस तरह का मतलब साहित्य इतिहास के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए. मुझे लगता है कि मैंने जब 1857 के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरा परसेप्शन बदला. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे एज ए हिस्टोरियन कि एक पत्रकार को किस तरह के इतिहास को पढ़ना, किस बुक पर जाए या किस तरह का इतिहास पढ़े, कब तक का इतिहास पढ़े जो कि काम चल जाएगा? देखिए, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट होने के नाते क्या होता है कि जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया आपको बीबी लाल का है? आज की तारीख में राम मंदिर टेम्पल का इशू एक बड़ा विषय रहा. उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने दी. उस समय की जो आर्कियोलॉजिकल एएसआई की जो फाइंडिंग्स है उनका एक बाद में पब्लिकेशन हुआ. उस पब्लिकेशन को जैसे बीबी लाल वगैरह सबने तैयार किया.
आपको उनको पढ़ना चाहिए, जो भी ये रिसर्च फाइंडिंग्स आ रही हैं उनको करंट टाइम में पढ़ना ही चाहिए। वॉट एवर न्यू लिटरेचर इज कमिंग, एंड हम जो वो पुरानी चीजें हैं वो पढ़ेंगे तो आज के कंटेम्प्रेरी विषय को उससे कोरिलेट कर पाएंगे, और इसका फायदा हमें उस सब्जेक्ट को एनालाइज करने में महती तौर पे होगा ही होगा। इसलिए जो भी लिटरेचर है जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी भी एक तरीके से लिमिट है आप कितना लिटरेचर पढ़ेंगे, बट बेसिकली जब मैं ये इंडिकेट करके कह रहा था कि वी हैव टू बी वेल इक्विप्ड विद अ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, देन आई वाज ट्राइंग टू टेल यू स्पेसिफिकली दैट ऑन दैट वे we'll be able to understand that किस तरीके से कौन सी बुक के साथ किस विषय को अपन न्याय कर सकते हैं। अभी there is another new book have come, an entirely new history of India, and this history book gives a different kind of the understanding about the Indian history. Why? Because it gives an alternative history which was not recorded so far in our history writing tradition. तो हमें जरूरत है कि हम इस तरह के जो नए लिटरेचर आ रहा है उसको पढ़ के और उसको आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस है उससे थोड़ा सामंजस्य में रख के इस लिटरेचर को, और उसको हम एक तरीके से चीजों को एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज तो यही हो जाएगा कि उन्होंने भी लिखा हमने भी लिखा। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस यही है कि आप दोनों तरह की चीजों को पढ़ने के बाद में यू विल बी एबल टू रीच ऑन अ कंक्लूजन दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, व्हाट हैज एक्चुअली हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री। सो दैट वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कोई सवाल? Sources are very important, sir. In both of the cases, whatever ideology is there behind writing history, I think that we should always see the bibliography, means what kind of sources are taken, and are the sources reliable or just the story is based on one specific idea? No? Definitely, ma'am, sources are very very important. Without the sources we cannot write the history. History is not possible. So there will be primary, secondary sources, but again I'll tell you, the very importance is that how we are dealing the sources. Yes, sir. Because to deal with the one particular sources, we can deal with the multiple way, and this also depends on us that which particular part you want to choose while we are dealing. अब किसी चीज में लिखा हुआ है कि कोई इवेंट को लेके, तो उस इवेंट को आइदर हम जैसे मैंने बोला सोशल हार्मनी भी बना सकते हैं, और उसको ये भी बता सकते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड इन द एक्चुअल सेंस, दैट द बेसिकली एग्जांपल आई हैव गिवन अबाउट द टीपू सुल्तान। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर इंटेंशन एंड हाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट विद व्हाट काइंड ऑफ द मेंटल स्टेट, and their larger role is played by the ideologies. So the 2-3 things will come together, but again I will urge to all of them that as a young mass communication student professionals, this is much required for them that they should be objective and read as much as possible, and there is a much emphasis should be given on the alternative history. As I have told that I was amused to know that none of them is aware about Dharamapal ji, Jadunath Sarkar and many others in the line. So it shows that this actual history, I would say that this is a much more actual history about the India, and it is somewhere left out completely from the public domain. And
as a young professional, you can do the justice to this actual history of the India. This belongs to the culture of this country. सर टीपू सुल्तान की जयंती उस पे रोक क्यों लगा दिया गया? Because टीपू सुल्तान जयंती है ना, उस पे रोक क्यों लगाए बीजेपी सरकार ने? तो वो मेरे अंडर में नहीं है, मैंने रोक नहीं, मैंने एज ए हिस्टोरियन अप्रोच कर दिया था उसको। नहीं, दो चीजें सुनो। मैंने एज ए हिस्टोरियन जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है और जो रियलिटी है, कांग्रेस के नेता पूर्व नेता और बीजेपी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व थे, उसने अलाउ कर दिया सेलिब्रेट करना चाहिए। बीजेपी ने रोक क्यों लगा दिया? वो बीजेपी वालों से पूछो। मैं एज ए हिस्टोरियन मेरा सबमिशन मैंने किया है। वो आप ही बोल रहे थे टीपू सुल्तान के बारे में। नहीं, मैंने हिस्टोरिकल नैरेटिव बताया, पर्सपेक्टिव बताया, उसको डील करने का क्या है। मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मैं एक हिस्टोरियन हूं और हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि क्या किस तरीके से उसको हिस्टोरियंस ने आज तक डील किया है। मेरा सबमिशन उसमें ये है और वो बहुत बड़ी बात है जो बात आप बोल रहे हो उससे, क्योंकि वी आर समवेयर इनइग्नोरेंट अबाउट आवर पास्ट। हमें हमारे पास्ट की रियलिटीज के बारे में पता ही नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि हमें जो एक एक्चुअल अल्टरनेटिव हिस्ट्री है वो आज तक हमें बताई ही नहीं गई है। वी आर इग्नोरेंट कंप्लीटली अबाउट दैट। दैट्स व्हाई ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग। ठीक है। और यदि किसी ने प्रतिबंध लगाया तो शायद उनको समझ में आया होगा कि any individual should not be glorified. कांग्रेस सरकार ने किया था कि चल सेलिब्रेट करना चाहिए, बीजेपी सरकार इसके बारे में बताओ हमारा। Any other question? ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन नहीं है। कोई और सवाल आपका? जैसे कि अभी भाई ने बताया एक और कैरेक्टर है बीडी सावरकर, उसके ऊपर उसकी वास्तविकता के ऊपर उसके हिस्टोरिकल कैरेक्टर के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज सवाल उठाती रही है। तो आप हमको उसकी लाइफ के जो रियल फैक्ट्स है उनके बारे में बताइए कि क्या वो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर वास्तव में अंग्रेजों के गुलाम थे जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है। 2-3 चीजें बताऊंगा एज ए हिस्टोरियन। वीडी सावरकर जी का आपने जिक्र किया एंड द पर्सन हु हैज बीन पोर्ट्रेड एज you know who has gave his submission to the Englishmen, ज्यादातर उनको ऐसे ही पोर्ट्रेट किया जाता है। Another way it is portrayed that V.D. Savarkar is the person who has propagated two nation theory। ठीक है, बहुत सारे तरीके से आरोप इतिहासकार उन पे लगाते हैं। पहला सबमिशन, क्या आपको पता है कि वी.डी. सावरकर जी से तकरीबन 40 साल पहले सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट किया था। सर सैयद हैव प्रोपोगेटेड टू नेशन थ्योरी एंड ही सेड व्हाट ही सेड। Sir Syed said that Hindus and Muslims are two antagonistic races and they should not live together. This is the particular statement made by Sir Syed. Another thing, आजकल बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है इस चीज को लेके कि what way V.D. Savarkar have contributed in the India's freedom struggle। हिंदू महासभा की जब मीटिंग हुई, ठीक है, और हिंदू महासभा की स्थापना से लेके उसके जो कोर आइडियाज हैं उनको लेकर आगे जाएंगे। क्या हिंदू महासभा ने पूरे देश भर में अलग जगाने का काम किया या नहीं, ये इतिहास के पन्ने हैं, वो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से वहां पर किस तरीके से उसका योगदान रहा है हिंदू महासभा का। एंड द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द V.D. Savarkar इन द हिंदू महासभा, लाइक
I think many less people are ignorant about it. ठीक? We are not that way ignorant. पूरे देश भर के एटलीस्ट जितनी यंग जनरेशन हो उसको तो सबको पता ही है. So a significant contribution made by the V.D. Savarkar ji in India's freedom movement, as well as while being in the Hindu Mahasabha, he contributed a lot. And another way, the blame which given to him about the two nation theory propagation, which is completely false, it is propagated by Sir Syed. Yes. Clear? Sir, I was asking, you were discussing about alternative history. How can we have two histories? Like alternate history means this history and that history. We should have one history. Like we can accept that the history can be distorted, but then we have to bring the real history with it. Okay, like you said that we have to merge the both, but there should be one real history. How can we accept an alternate? First of all, I didn't say that you have to merge these two. Yes. I said that you have to read the both. Yes. And as a historian, it should not be like I am propagating anything. Yes. I'm just telling you what is the actual position. Yes, sir. And while after reading these two different streams of the history, you will be able to understand that which is the objective history, which is not objective history. Yes. Okay? As you have asked that there should be one kind of the history, I agree with you. But which kind of the history should be there? This is also debatable. Whether the history आपको मैंने 4 नाम गिनाए, वो 4 नाम आपको पता नहीं, ठीक है? Frankly speaking, Yes, sir. हमारे को इतिहास में देखो, मैं कुछ 2 लाइन पढ़ूंगा आपके सामने. For at least last 40 years, we have taught to forget historical injustices. From Somnath to Kashi Vishwanath, from Allahabad to Aurangabad, to demand the justice of the past. This is need of the time that we should know what has happened in the past. And these historical mistakes needs to be corrected. If these historical mistakes need to be corrected, then the history needs to be corrected. And the moment history will be corrected, then the justice with the actual history will take place. So this is required, that justice should be done to the history. अगर हम बेसिस हिस्ट्री की बात करें, जो शायद पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से लेकर के हम 10वीं तक पढ़ते आए, एक बहुत बड़ा सिलेबस मुगल्स पे लिखा जा चुका है और इस पे बहुत डिबेट भी हुई है कि मुगल्स पे, क्योंकि अगर आप किसी हिस्ट्री किसी भी अगर जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज आप उससे पूछेंगे तो आप बाबर से लेकर के औरंगजेब तक आपको पूरी हिस्ट्री उनका हर एक एम्परर का बता देगा. लेकिन उसी के ड्यूरेशन में जितने हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हो या देश के हमारे और भी ऐसे बहुत सारे महान पुरुष रहे, उनके बारे में हमको नहीं पता. जैसे अभी आपने 2-3 नाम बताए, हमें तो बहुत कम लोग बता पाए. तो ये किस तरह से उनकी कैरेक्टर को हिस्ट्री में एम्फसाइज किया गया, किस तरह से इंटरप्रिटेट किया गया, किस तरह से बताया गया कि अकबर महान राजा था, क्योंकि अकबर में डाइवर्जन भी किया, अकबर ने हिंदुओं पे भी अत्याचार किया, अकबर ने कई लोगों के साथ में, मतलब गरीबों के साथ भी किया, बहुत सारी ऐसी चीज उसने करी, लेकिन हम फिर भी पढ़ते रहे कि अकबर महान राजा था. मैं देखो एज ए हिस्टोरियन के नजरिए से एक ही चीज बोलूंगा कि अल्टरनेटिव हिस्ट्रीज को पढ़ाया जाना चाहिए. जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं तो हमें सूरजमल और बदन सिंह का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमें सुहेल देव रागम का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमें गोंडवाना किंगडम की रानी दुर्गावती का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, हमें चोल चेरा पांड्या और ये वारंगल में
रानी रुद्रमा देवी और अन्य का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। ये जो कॉलोनियलिस्टिक माइंडसेट से जिस तरीके से हमारे कल्चर को नेगेट किया गया है, हमारी उपलब्धियों को नेगेट किया गया है, एज ए हिस्टोरियन आई थिंक I will work on that, but I don't know that as a mass communication professional how you will work. So this is a greater responsibility lies on your shoulders. I will not make any comments until I works in that field which you have asked me. Thank you. Thank you, sir.